Ilyas Bulbulia, and I'll be with you for the next hour. As our regular viewers are aware, on Just Law we do two things. First of all, it's a live show, so callers have the opportunity to call in and ask us any questions that they have on any aspect of English law. And secondly, what we tend to do is discuss an area of law which is of interest to you, our viewers. And the topic for today is going to be European applications, and in particular how those who are here as Europeans or those who are here as dependents of European citizens, how they can apply for indefinite leave to remain in the United Kingdom. As our viewers will be aware, over the last few weeks we've sort of gone through different aspects of immigration law. We've started from looking at how applications are made, entry clearance applications are made to come to the United Kingdom. We've then looked at how further leave to remain applications can be made in the United Kingdom, which allows people to extend their stay in the United Kingdom. Ultimately, I think we've looked at nationality applications as well. One of the things that we haven't looked at over the last few weeks is the issue in relation to European nationals and their family members, and in particular how they can apply for indefinite leave to remain. And it just so happens that with European applications, they have a different term. Just to complicate matters, they call it permanent residence. So we'll be looking at how someone can apply for permanent residence in the United Kingdom. But as always, it's a live show, so the number that you can call on will be appearing at the bottom of the screen. Just a couple of little points before we get going. Obviously, it's a live show, so when you call in, the amount of detail that we can take from you live on air is sometimes limited. If it transpires that the matter is quite complicated, then I'll ask you to leave your number, and then I will give you a ring after the show has finished, and I can get more details from you later on at that stage. Secondly, because it's a live show, obviously we're not able to look at documents. If it transpires that I need to look at your documents before I can advise you properly, again, I'll ask you to give me a ring later on, and then I can arrange for you to send your documents over, and then we can have a proper discussion about your issue after I've seen your documents. But in my experience, I should be able to deal with most queries that you have on English law. We get a lot of calls on immigration matters, spouse applications, points-based system applications, indefinite leave to remain applications, etc., which is absolutely fine. Whatever questions you've got, do please pick up the phone and give us a ring, and inshallah we'll have a thorough discussion about that in due course. Now, let's turn to the topic for the day. As I said at the outset, what we're going to be looking at today is European applications, but not entry clearance applications or indefinite applications. What we want to look at is how Europeans who are in the United Kingdom, how their dependents who are in the United Kingdom, how they can apply for indefinite leave to remain or permanent residence. That's what I want to look at today. And just before coming on the show, what I've done is just looked at the government website again, just to make sure nothing's changed. As our viewers will be aware, normally in April, around the 5th or 6th of April, normally the government does make a lot of changes to the forms, to the fees, etc. So I've had a look to see what's happened, and to be quite honest, we've been quite lucky. There's been no fee increase as far as European applications are concerned. It's still at the rock bottom price of £65 compared to normal immigration applications, where applicants are paying something in the region of about £1,000 for those applications. So let's look at the situation of a European national who's been living in the United Kingdom, or indeed a dependent who's been living in the United Kingdom. Now, the starting point is that in the vast majority of cases, when certainly with the case with dependents of European nationals, when they come to the United Kingdom, they're normally granted a 6-month visa, and then they apply for a 5-year residence card. So with dependents of European nationals, you will normally see that they have a 5-year resident document which confirms that they're family members of European national, confirms their right to live in the United Kingdom. And normally what
tends to happen is once the dependents come to the end of 5 years, at that stage they seek advice to see how they can make an application for indefinite leave. Contrast that with European nationals who are in the United Kingdom. What you tend to find is that they don't normally have a residence document. Sometimes they do, but in the majority of cases they don't. And they simply complete 5 years in the United Kingdom, and at that stage they look for advice as to how they can apply for permanent residence. Now, in my experience, the problem that a lot of people face is that they only realize at the 5-year mark, after they've spent 5 years in the United Kingdom, that there are certain requirements which need to be fulfilled. These are quite stringent requirements. I mean, before I go into this in a lot of detail, let's take the classic example where you've got a European national who's been here for 5 years, and at the end of 5 years they want to make an application for indefinite leave, and they normally turn to a lawyer for advice at that stage, and the lawyer says, well, in normal circumstances we need to show what you've been doing for the last 5 years. So have you been employed? Have you been self-employed? Have you been on maternity leave? Let's go back 5 years and let's track in those 5 years what you've been doing. And then you realize that there are gaps in employment, gaps in self-employment, there are gaps because people, when they haven't been working, they haven't registered as unemployed, etc. And it's only at that stage that people realize that the requirements that need to be fulfilled, which are requirements as to what they've been doing over the last 5 years, they realize at the end of 5 years that they can't fulfill those requirements. And it's unfortunate that that only comes to light at the very end. Now, so what I want to do today is really look at the requirements now, so that if you're in that situation where you're a European national or you're the family member of a European national, then you can start making arrangements now to meet the requirements, so that when we get to the 5-year mark, there isn't a problem. You will easily demonstrate that the requirements are met, and you know, as opposed to what seems to happen in the vast majority of cases at the moment, at the end of the 5-year period, at that stage people realize that there is a problem in that the documents that are required can't be fulfilled, don't exist. Let's take our first call for the day, and then let's look at this topic later on. Hello, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, मैंने एक क्वेश्चन सर आपसे पूछना था। मैं अभी जा रहा हूँ ILR पर 10 जून को मेरे 5 साल मुकम्मल होने टायर 1 इंटरप्रेन्योर पर। जी। लेकिन मेरी जो नेक्स्ट एक्सटेंशन थी, जो यानी कि वीज़ा ख़त्म होना, वो 20 जुलाई को फिनिश होना है सर। आई अंडरस्टैंड जी। तो यानी कि 10 जून को मुझे यानी कि वीज़े पर पूरे 5 साल हो गए हैं जी। तो जो मेरे साथ डिपेंडेंट हैं, तो उनकी भी एक्सटेंशन जो है वो 20 जुलाई को यानी कि ड्यू है जी। तो अब हम 10 जून से पहले जा सकते हैं कि अभी हमने सारा कुछ कैसे क्या करें सर, कब हम अप्लाई कर सकते हैं? आपकी जो सिचुएशन है, आपका 5 years कंप्लीट हो जाएगा 10th जून को। मेरा 10th जून को पूरा हो जाएगा सर। ओके। और आपके जो डिपेंडेंट्स है उसके कंप्लीट हो जाएंगे या नहीं हो जाएंगे 5 years? नहीं, उनके तो नहीं, उनके तो वो लेट हो जाएंगे सर। वो लेट आए। हाँ, तो उसके लिए वेट कर लो आप, उसके लिए वेट कर लो आप। नहीं तो अभी मैं जो एप्लीकेशन है वो मैंने आपकी 10 जून से पहले अप्लाई कर सकता हूँ अपने ILR के लिए, उनकी एक्सटेंशन के लिए। आपके लिए जो है ना, वो आप 28 days बिफोर अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि 10 जून से पहले मैं। हाँ, 10 जून से 28 days बिफोर आप कर सकते हैं। सो आप कर सकेंगे मई में, रफली 12 और 13th of May आप अप्लाई कर सकेंगे आपके लिए। नाउ होपफुली आपका इंडेफिनिट लीव हो जाएगा, होपफुली। तो जो डिपेंडेंट होंगे सर, उनकी भी साथ एप्लीकेशन में वो जो एक्सटेंशन के लिए अपने साथ ही डाल सकता हूँ। हाँ, मगर उसका 5 years कब कंप्लीट होंगे यूके में? उनके तो जाकर होंगे सर 2009 के अगस्त में होंगे। तो थोड़ा सा टाइम है ना। हाँ, तो उसके लिए भी आप डाल सकते हैं, प्रॉब्लम नहीं है, मगर इट जस्ट डिपेंड्स के आप क्या करेंगे। बेस्ट ऑप्शन तो ये है कि उसका भी
उसके लिए आप जो एप्लीकेशन डालेंगे तो उसका एज अ पॉइंट्स बेस्ड सिस्टम डिपेंडेंट वो बेसिस पे ही उसका भी एक्सटेंशन के लिए आप अप्लाई कर लो एज अ पॉइंट्स बेस्ड सिस्टम डिपेंडेंट। इसमें आपका चॉइस है कि आप उसका एक्सटेंशन 10th of June पे डालें, या तो आप जो मई में अप्लाई करेंगे तब डालें, या तो आप वेट करें अप अंटिल जुलाई और तब डालें। इट्स नॉट रियली गोइंग टू मेक अ डिफरेंस, आइदर डेट्स आर फाइन, बिकॉज उसका तो विच एवर वे यू डू इट वो तो एक्सटेंशन एप्लीकेशन ही होगा। सो आपके लिए तो स्ट्रेट फॉरवर्ड, आप मई में अप्लाई कर लो। और तो जो मई के बाद मेरा साल, मैं तो 1 डे सर्वस्ता तो नहीं जा सकता, लेकिन मेरी अगर वो उन्होंने देर कर दी एप्लीकेशन में तो फिर मैं उनकी एक्सटेंशन डालूंगा सर। जी, तो आप तो ऑब्वियसली, सॉरी आई डिडंट हियर यू, आई डिडंट कैच यू क्वाइट वेल प्रॉपर्ली, आप तो इनडेफिनिट का एप्लीकेशन डाल देंगे ना अभी तो? जी जी जी। हाँ तो ठीक है ना, और उसका डिपेंडेंट का एप्लीकेशन डालो ना। जस्ट आई थिंक टू बी ऑन द सेफ साइड आप ऐसे करो, आपका डाल दो 20th of July से पहले, उसका एप्लीकेशन डाल दो एज अ डिपेंडेंट, सेपरेट डाल दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब आप सबमिट करेंगे तो इसमें बता देंगे ना कि मेन एप्लीकेंट आप है, आपका एप्लीकेशन पेंडिंग है, आप बता देंगे ना इसमें। तो यानी कि उनका फिर साथ वो अपने डॉक्यूमेंट लगाकर फिर उनको वो भेज देता। हाँ, उसका भेज दो और उस पर कॉन्फर्मेशन भेज दो कि आपने आपका एप्लीकेशन डाल दिया है, वो तो दैट्स फाइन। क्योंकि ये होता है ना कि जब डिपेंडेंट्स के एप्लीकेशन जब आएंगे तो वो उसको होल्ड पे डाल देंगे जब तक आपका एप्लीकेशन डिसाइड नहीं हुआ। अगर होपफुली इंशाल्लाह आपको इंडेफिनिट मिल जाएगा तो उसको भी एज अ पॉइंट्स बेस्ड सिस्टम डिपेंडेंट वो उसको एक्सटेंशन दे देंगे 3 years के लिए। जी जी। तो सर यानी कि मैं फिर अपना 10 जून से पहले 10-15 मई को डाल दूं केस? दिस नो प्रॉब्लम, आप आपका डाल दो। डिपेंडेंट्स का लेटर उसका वीज़ा ख़त्म होने वाला है, इट डजेंट रियली मैटर। आप आपका 100% डाल सकते हैं 28 days बिफोर आपका 5 years कंप्लीट जो होता है आप डाल सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर उनके अगर फिर उनकी तो आपको पता सारे हेल्थ इंश्योरेंस भी कराएं, फिर यानी कि अगर उन्होंने मेरा थोड़ा सा देर लगा दी केस में तो फिर कोई बात नहीं, मैं अपने कोई बात नहीं, इट डजंट मैटर। तो अब क्योंकि आपका जो एप्लीकेशन है ना वैसे भी टाइम लगेगा उसमें, सेटलमेंट एप्लीकेशन थोड़ा सा क्विकर है, तब भी आई थिंक रफली 5-6 months तो निकल जाएंगे आपके एप्लीकेशन में। सो आपका डिसीजन भी मई में डालेंगे तो रफली अबाउट नवंबर में आएगा आपका डिसीजन। तो आपका जो फैमिली मेम्बर्स है उसका एप्लीकेशन वो होल्ड पे डाल देंगे, एंड आपका जब अप्रूव होगा तो उसका डिपेंडेंट एप्लीकेशन भी अप्रूव कर देंगे और 3 years की वीज़ा एट दैट स्टेज लगा देंगे, तो विच इज़ फाइन, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इट डजंट मैटर। ओके सर, थैंक यू सर, मैं फिर ऐसे ही करता हूँ सर जैसे आपने वो बेस्ट वे है, सेफेस्ट वे है, नथिंग टू वरी अबाउट ऑन दैट। ठीक, ओके सर, नो प्रॉब्लम है। चलो थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। विल टेक आवर नेक्स्ट कॉल। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो जी सर, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी भाई, थैंक यू फॉर कॉलिंग। जी जी, मुझे आपसे एक बात पूछनी थी जी केस के बारे में। जी ठीक है। अच्छा, मैं अपनी वाइफ का केस यहाँ पे इन किया है यूके बर्मिंघम में। जी ठीक है, तो वहाँ से उन्होंने निकाल ली है और जो HMRF की जो पैसे 623 पाउंड वो भी निकाल ली है जी। में उन्होंने यानी कि मुझे दे दिया है वाइफ का मतलब अपॉइंटमेंट, जो उन्होंने कहा कि पासपोर्ट वहाँ पे जमा करा लो। ठीक है। तो मुझे सर आपसे ये कहना था कि पूछना था कि ये जो अभी कितना और टाइम लग जाएगा अंदाजन? आपने जो एप्लीकेशन डाला है ना वो किस बेसिस पे डाला है? जी, वो जो एप्लीकेशन जो आपने सबमिट किया है वो किस बेसिस पे सबमिट किया है? क्या रूट? शादी पे, मैरिड वीजा। मैरिड वीजा, ऑलराइट, ओके। ओ सॉरी, आपकी वाइफ यहाँ है या? ना, मैं यहाँ पे हूँ और मेरे पाकिस्तान में है। समझ गया जी। और जो आपने एप्लीकेशन किया था वो नॉर्मल वाला क्या था, ये जो प्रायोरिटी एप्लीकेशन है फास्ट ट्रैक वो क्या था? दोनों में से क्या किया आपने? नहीं, ये मैंने वकील के थ्रू किया था क्योंकि मेरी यहाँ पे काम लगा हुआ है, मैंने जी किया था। तो आपने वो नॉर्मल किया था या तो ज्यादा पैसे देकर फास्ट ट्रैक किया था, क्या किया था? नहीं, नॉर्मल किया था नॉर्मल क्योंकि मैंने 1464 पाउंड दिया था। आई अंडरस्टैंड जी, ठीक है, ऑलराइट। सो नॉर्मल जो स्पाउस एप्लीकेशंस है, मैरिज एप्लीकेशंस, नॉर्मल वंस में उसकी प्रोसेसिंग टाइम है रफली 3 to 4 months। एट द मोमेंट थोड़े से स्लो हो गए हैं और अबाउट 4 months में केसेस डिसाइड करते हैं। 4 महीने जी, आई थिंक 4 months के अप अंटिल 4 months कोई आपको इंक्वायरी नहीं करनी चाहिए, बिकॉज इट इज़ रफली टेकिंग 4 months एट द मोमेंट डिसीजन। 4 मंथ लगेंगे और जी जी।
जी मतलब 4 मंथ से पहले पहले भी हो सकता है और लग भी सकते हैं। हाँ, हो सकता है, मगर जनरली फॉर अ नॉर्मल एप्लीकेशन मिनिमम टाइम अबाउट 3 मंथ्स लगाते हैं। जनरली एट द मोमेंट अबाउट 4 मंथ्स लगता है जनरली। क्योंकि जब मैंने वकील को किए थे ना केस वगैरह, तो उसका तकरीबन टोटल 4 महीने और 5 हफ्ते लग गए थे। हाँ, तो पैसे और उन्होंने अपॉइंटमेंट जो था वो लास्ट तकरीबन 2 हफ्ते पहले दिया था इस्लामाबाद का। ओके ओके, ठीक है ना। तो तब भी देखो, अगर 2 मंथ्स बिफोर उसने पैसे ले लिए, डॉक्यूमेंट्स भी यहाँ आपने शेफील्ड में सबमिट कर दिए। हाँ, वो मैंने भेज दिए। हाँ, कब भेजे थे? अभी भेजे? ये तकरीबन सर मैंने लास्ट वीक भेजे थे यहाँ से। चलो, तो रफली ऐसे करो ना कि ये दोनों काम हो गए, एप्लीकेशन भी सबमिट हो गया, ये पाकिस्तान में डॉक्यूमेंट्स यहाँ शेफील्ड में सबमिट हो गए, तो जस्ट अज्यूम कि 3 मंथ्स में डिसीजन आ जाएगा। सो रफली जुलाई तो में। इसमें सर मुझे ये आपसे पूछना था कि अगर केस में तो कोई मसला तो नहीं होगा, मतलब कोई का या कोई ऐसे वैसे कोई नहीं, अगर वकील ने तैयार किया है तो होपफुली वो सब ठीक ठीक ही किया होगा ना। सो नॉर्मल तो मेरे सामने एप्रूव करके मुझे बस जी अभी बिल्कुल ठीक है जी, माशाल्लाह। तो अगर वकील ने कहा कि ठीक है, कोई आप फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, वो तो सब होपफुली प्रॉपर ही होगा। आपकी वेज स्लिप है, बैंक स्टेटमेंट्स, एम्प्लॉयमेंट लेटर, होपफुली वो प्रॉपर ही होगा। जो एनी एक्सपीरियंस लॉयर वुड होपफुली डू इट प्रॉपर्ली। क्योंकि मेरा एक बेटा भी था पाकिस्तान में 4.5 साल का तकरीबन, तो मैंने लास्ट ईयर पहले उसका ब्रिटिश पासपोर्ट अप्लाई किया था जी, वो अच्छा किया क्योंकि मेरी यहाँ पे नेशनलिटी है ना, जी, तो उसका अच्छा। अल्हम्दुलिल्लाह पासपोर्ट मिल चुका है। ये अच्छा किया आपने, ये इट्स हेल्पफुल, वेरी हेल्पफुल। वो तो मिल चुका है, लेकिन अभी जो मैंने सिर्फ अपनी वाइफ का केस जी किया था मतलब शादी के ऊपर जनरली ना। जी, जनरली क्या होता है कि वो जो एप्लीकेशंस होते हैं जिसमें चिल्ड्रन भी होते हैं, जैसे आपके पास चाइल्ड है, तो वो केसेस में नॉर्मली वो रिलेशनशिप को वो मान लेते हैं कि ये सब जेन्युइन है, बिकॉज ऑब्वियसली देयर इज अ चाइल्ड फ्रॉम द मैरिज, वो मान लेते हैं। वो टाइप ऑफ केसेस में सिर्फ वो फाइनेंसेस पे फोकस करते हैं कि आपका काम जो आपने बताया वो प्रॉपर है या नहीं, इस पे फोकस नहीं सर, करते मेरी हैं। तो यहाँ पे माशाल्लाह फुल जॉब है जी जी, ठीक। और मेरी जो अकाउंट में पैसे भी थे तकरीबन 8,000 तकरीबन थे। ओके, होपफुली इट शुडंट बी अ प्रॉब्लम, इट साउंड्स फाइन टू मी। आपने जैसे जो बताया अभी फ़ोन पे मुझको ठीक लगता है। होपफुली डिसीजन आ जाएगा रफली प्रॉब्ली अबाउट जुलाई टाइम में, इंशाल्लाह डिसीजन आ जाएगा आपका होपफुली। तकरीबन 3 महीने लग जाएंगे ना अभी से जी जी, फ्रॉम नाउ ऑन अबाउट 3 मंथ्स, या इट साउंड्स अबाउट राइट। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया। नो प्रॉब्लम है, इंशाल्लाह कोई गुड रिजल्ट आएगा आपके लिए। थैंक यू। ओके भाई, चल जज़ाकल्लाह, थैंक यू फॉर कॉलिंग। So let's just go back to what we were discussing, and in particular about European applications and indefinite leave or permanent residence applications that Europeans and their family members make. And what I was saying at the outset was, it's unfortunate, but what tends to happen in my experience is that people only realize 5 years down the line, when they're about to make an indefinite leave application, that there are certain requirements that need to be fulfilled, and they realize at that stage that those requirements have not been fulfilled. So what are those requirements? What is it that European nationals, their family members, what is it that they need to do? So let's just have a look at that. And like we've covered in other shows, when a European national comes to the United Kingdom, they don't have an absolute right to live in the United Kingdom. They only have the right to live in the United Kingdom initially for 3 months. And during those 3 months, they don't need to be doing anything. Now, after 3 months, if they want to continue living in the United Kingdom legally, it's not enough that they have a British passport, or I beg your pardon, it's not enough that they have a European passport. That in itself, after 3 months, does not give them the right to live here. The European national needs to be what is classed as, or what is known as, they need to be exercising treaty rights. Essentially, what that means is that the European national needs to be working in the United Kingdom. They could be employed or self-employed. They can be a student in the United Kingdom, or they could be looking for work. If you're looking for work, you need to be registered with the job centre and looking for work, and there's only a limited time whilst you're allowed to look for work.
or alternatively, you have to be self-sufficient. So if you look at a European national, that European national has to fall into one of those categories: work, self-employment, student, in search of work, or in a self-sufficient category. Now, the reason I go through that, and the reason I am emphasizing that, is that in 5 years' time, when they apply for permanent residence, they will need to demonstrate which category they fell into for which period of time. And if there is a gap when none of those apply, then there may well be difficulties in applying for indefinite leave to remain. I think we have a caller online. Let's take our call. Hello, अस्सलाम वालेकुम. हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी. जी वालेकुम सलाम जी, थैंक यू फॉर कॉलिंग. सर, मेरा क्वेश्चन था कि मैंने असाइलम किया था, वो रिफ्यूज हो गया, जीआर भी रिफ्यूज हो गया जी. तो 7 माह पहले मैंने फ्रेश क्लेम किया था जी. उस वक्त मेरे बेटे की उम्र जो है वो यहाँ पे यूके में उसने 6 ईयर 6 माह 6.5 साल गुजार लिए जी. ठीक है, ठीक है. जब मैंने फ्रेश क्लेम किया था मेरे बेटे ने 6.5 साल गुजार लिए थे जी. वो पाकिस्तान से आया था, 2 साल का था जब आया था जी. ठीक है, ओके. तो 7 माह तो मुझे कोई रिप्लाई नहीं आया. पिछले माह मेरे बेटे ने 7 साल कंप्लीट कर लिए यूके में. तो मुझे लास्ट वीक लेटर आया है कि बीआरपी इनरोलमेंट के लिए. राइट, ओके, ओके. लेकिन फ्रेश क्लेम का कोई रिप्लाई नहीं आया जी. सिर्फ लेटर आया है. तो मुझे अब क्या करना चाहिए, एक तो काइंडली ये बता दीजिएगा. क्योंकि मैंने 7 इयर्स की बेस पे नहीं, जब मेरे 6.5 साल हुए थे तब मैंने फ्रेश क्लेम किया था. उसका जवाब अभी तक नहीं आया. और मुझे ये भी बता दीजिएगा कि ये इस बायोमेट्रिक्स का मतलब क्या है, कि अब वो मुझे बीआरपी कार्ड इशू करेंगे, क्योंकि उन्होंने लिखा है कि एप्लीकेशन को प्रोसीड करना है, नेशनैलिटी और अपनी आईडी वगैरह आपकी वेरीफाई करनी है और 5 दिन के अंदर बीआरपी कार्ड इशू करना हो, तो ऐसा कुछ लिखा हुआ है. ठीक है, ऑलराइट, ओके. सो आपका जो अभी जो एप्लीकेशन होम ऑफिस के साथ अभी जो पेंडिंग है वो आपका फ्रेश क्लेम है ना, और तो कुछ नहीं है ना? जी जी, फ्रेश क्लेम है. ऑलराइट. और उसने अभी आपको कहा है कि आप ये आपका आईडी चेक करनी है, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ चाहिए. बीआरपी के लिए लेटर आया था कि बायोमेट्रिक्स करो जाके. कोई बात नहीं. ओके, आप कर लो, इसमें कोई देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट इन दैट एट ऑल. आप कर लो. अगर वो एज अ रिजल्ट ऑफ योर फ्रेश क्लेम अगर वो आपको यहाँ वीज़ा दे दे तो फंटास्टिक, ओके, हो गया काम. अगर उसने नहीं दिया और रिजेक्शन आ गया, लेट्स से इन 3 months टाइम, 4 months टाइम, 5 months टाइम, जो भी है, अगर उसने रिजेक्ट कर दिया आपका फ्रेश क्लेम, तो एट दैट स्टेज आप एप्लीकेशन डाल सकते हैं, पेड एप्लीकेशन आपके बच्चे के बेसिस पे आप डाल सकते हैं. जी. क्योंकि आपके बच्चे की एज 7 years हो गई. और एक सॉर्ट ऑफ गुड न्यूज़ है, अभी अपर ट्राइब्यूनल का एक अभी रिसेंटली एक केस बना है लास्ट वीक में, जो मैं येस्टरडे ही उसका डिसीजन पढ़ रहा था. तो इसमें अपर ट्राइब्यूनल ने कहा है कि अगर कोई बच्चे ने यहाँ 7 years गुजार दिए यूके में, वंस दे हैव स्पेंट 7 years इन द यूनाइटेड किंगडम, तो वो कहते हैं कि दैट इज़ अ वेरी पावरफुल रीज़न फॉर द चाइल्ड टू बी गिवन leave to remain. So it's a, वो कहते हैं courts, the upper tribunal is saying कि it's a strong reason, 7 years of residence is the strong reason for which visa देनी चाहिए बच्चे को. अगर बच्चे को visa देंगे तो obviously parents को भी देना पड़ेगा. So there's a very helpful decision now from the upper tribunal. और दूसरी बात ये है कि वो कहते हैं कि when they say कि it's a very powerful reason, तो वो कहते हैं कि in the absence of criminality, in the absence of deception etc, ये फैमिली को वीज़ा देनी चाहिए. सो इट्स वेरी हेल्पफुल. ये जो ये सिचुएशन है कि 7 years बच्चे ने यहाँ गुजार दिए, तो इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग केस दैट यू कैन सबमिट. पर अभी आप सबमिट ना करो, आप ऐसे करो कि आप अभी सबमिट ना करो, आप ऐसे करो कि फ्रेश जो क्लेम है उसका डिसीजन के लिए वेट करो, एंड देन आप आफ्टर दैट वो डिसीजन आप अगर नेगेटिव कोई डिसीजन आए तो एट दैट स्टेज एप्लीकेशन डाल दो. चलो, we're just going to take a short break and we'll be back in the next few minutes.